Hello students, very warm welcome. In this video, we are going to discuss on popular demand जो आप लोग चाहते थे WBJEE 2019 30 day super strategy, tips and tricks and how to attempt the paper. ठीक है, तो जल्दी से बात करते हैं WBJEE के बारे में, कब होना है, क्या करना चाहिए, क्या मार्किंग स्कीम है, कैसे मैक्सिमाइज करना चाहिए, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सब बात करेंगे इस वीडियो में. सो लेट्स स्टार्ट दी पर्टिकुलर वीडियो. ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि सबसे पहले अगर हम इसके बारे में बात करें डेट के बारे में, तो डेट इज ऑन 26th, राइट, एज यू कैन सी. और बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ था इस डेट को लेके बिकॉज इनिशियली जेई एडवांस का पेपर जो था यार वो आपको पता होगा 19th मई को था, देन इट गॉट शिफ्टेड टू 27th मई विच इज ऑड बिकॉज इट्स अ मंडे को क्यों हुआ, क्योंकि संडे को ऑलरेडी WBJEE डिक्लेयर्ड था. तो इस तरीके से ये एग्जाम हुआ. नाउ मोर इंपॉर्टेंट थिंग कमिंग टू हियर इज देयर आर टू एग्जामिनेशंस, पेपर 1 एंड पेपर 2. अ लॉट ऑफ यू वुड बी नोइंग. मोस्ट इंपॉर्टेंटली माय कंसंट्रेशन इज ऑन दिस ब्रेक पार्ट. जो ये ब्रेक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नोटिस करो 2 hours पेपर इन द मॉर्निंग and 2 hour paper in the afternoon rather, right? So it's going to be stressful day. Stress होता है बहुत ज्यादा. अगर आप नोटिस करो, combine करो इसको, so it's a 5 hours exam, right? Think of this like this. बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, they make a stamina. So इसमें important चीज क्या है, stamina का, right? So you make a stamina of 2 hours, whereas the stamina is not required for 2 hours. So ये गलत याद कर लेते हैं कि यार 2 hours का पेपर है, 2 hours का stamina बनाना है. Stamina is actually for 5 hours. Because अगर if you do not utilize this break very well, then you are going to mess up your second section. So the important tip. So this video is all about tips of how to maximize your score. The first step is utilize the break very well. So by utilization, sir, what do you mean? Utilize कैसे करेंगे हम ब्रेक को? So the utilization can be best done by relaxation. ठीक है, आप रिलैक्स करेंगे इस पर्टिकुलर ब्रेक में. देयर शुड बी नो डिस्कशन ऑफ सर मैथ्स का पेपर कैसा था, दोस्तों से पूछ रहे हो, ये काम नहीं करना है और बर्बादी होगी. बेस्ट इज ड्रिंक वाटर एंड हैव ग्लूकोज बिस्किट्स. खाना नहीं है बहुत ज्यादा, राइट? 2 घंटे 1 घंटे खाओगे नहीं, मर नहीं जाओगे. ठीक है, सो ग्लूकोज बिस्किट्स ले सकते हो. दैट इज व्हाट यू कैन हैव चॉकलेट्स, राइट? दैट्स द थिंग दैट यू गाइस कुड डू. उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है. ठीक है, चॉकोज लिख देते हैं शॉर्ट. तो चॉकोज ले सकते हो, ग्लूकोज बिस्किट्स एंड वाटर. दिस इज हाउ एंड रिलैक्स. दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द ब्रेक. ओके, मूविंग फॉर दिस पेपर इज गोइंग टू बी कंडक्टेड ऑफलाइन. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, ये सबको पता है, इसको जल्दी से स्किप करते हैं. 200 मार्क्स कहां से हुए? 100 फॉर मैथ. सो इफ यू नोटिस दैट मींस मैथ गेट्स अ प्रेफरेंस हियर एंड दिस इज फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, राइट? 100 मार्क्स कम्स फ्रॉम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कंबाइंड, इंडिविजुअल नहीं है, कंबाइंड. एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आज इज 55. थोड़ा अजीब सा है बट बात करते हैं कैसे. इसमें अब अजीब सा पैटर्न क्या है जो सब लोगों को याद रखना है. देयर आर 3 कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन WBJEE. कैटेगरी 1 इज ऑफ फुल मार्क्स आर 1, फुल मार्क्स 2 एंड फुल मार्क्स 2 हियर. 3 कैटेगरी के क्वेश्चंस. और देखा जाए इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दिस इज हाउ मच क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी पुट अप. नोटिस करो, जब भी हमने कहा था अजीब सा आता है ना 180 कुछ अजीब सा, देखो कॉम्बिनेशन बनता है कि यार बड़े 155 क्वेश्चंस बनते हैं अजीब से. ठीक है, तो दिस इज दी 40 ईच मैथ्स. सो नाउ नोटिस मैथ्स है, ये मैं बता देता हूं कैटेगरी का क्या मतलब है, देन आई विल कम बैक टू दिस पर्टिकुलर स्लाइड. सो फर्स्ट थिंग इफ यू नोटिस कैटेगरी 1, ठीक है, कैटेगरी 1 अगर हम बात करते हैं, सो कैटेगरी 1 इज ओनली 1 ऑप्शन. सो MCQ बेस्ड and only one answer. That means you will just mark only one answer correct, right? So these are simple problems which you practice generally on a day to day basis. Okay, a lot of you will practice each question. Marks देखो कितना है यहाँ पर important, 1 mark questions, right? 1 mark. And negative marking is -1/4. 25% negative marking is there, right? To 25% negative marking. So if you notice in what happens here, आप एक स्लाइड पीछे जाके पॉज करके देख सकते हो. अगर मैं PCM की बात करता, so category 1 में it consists 30 questions here, 30 questions here. So if you notice 40 टोटल थे, उसमें से 30 और 30 इधर आ गए. और मैथ्स में एक्चुअली 50 क्वेश्चंस फॉल इन दी कैटेगरी 1, जबकि मैथ्स में टोटल कितने क्वेश्चंस आते हैं? 75. सो काफी वेटेज है कैटेगरी 1 की. दे वांट यू टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन कैटेगरी 1 लेवल प्रॉब्लम. सो अगर नोटिस करो ये कितने मार्क्स बन गए? 30 मार्क्स है, 30 मार्क्स है एंड 50 मार्क्स है. सो 110 मार्क्स ऑफ पेपर कंप्राइजेस ऑफ कैटेगरी 1 विच आर एक्चुअली ओनली 1 आंसर करेक्ट, राइट? ये जो आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो इसमें यू कैन एक्चुअली, द टिप इज यू कैन अप्लाई एलिमिनेशन. इफ आई टॉक अबाउट सर स्टैंडर्ड क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, पेपर का क्वालिटी कैसा होता है, सो द डिफिकल्टी, वी टॉक अबाउट डिफिकल्टी, सो ऑल ऑफ यू वुड हैव डन व्हाट? जेई मेंस,
So make it comparable to JEE Mains, and in some questions it will be greater than JEE Mains. So इधर की तरफ निगाह बना देते हैं. WBJEE sometimes ask questions which are difficulty level is greater than JEE Mains. So that's why it is a good paper. Only you, if you see good prepared students do well. That's why it's also a very low scoring exam, जो मैं बात करूंगा आगे. आगे बढ़ते हैं और आगे मैं दिखाता हूं कैटेगरी 2. कैटेगरी 2 क्या है? ओनली वन ऑप्शन करेक्ट अगेन, बट द क्लॉज इज नाउ यू विल गेट 2 मार्क्स. ठीक है, तो कैटेगरी 1 रिवाइज करते हैं. तो कैटेगरी 1 वाज कितना मार्क्स मिल रहा था? 1, और माइनस कितना हो रहा था? 0.25. कैटेगरी 2 में क्या हो जाएगा? यू विल हैव 2 मार्क्स एंड माइनस 0.5. ठीक है, क्यों? देखो साफ साफ लिखा है 1/2 मार्क्स विल बी डिडक्टेड. ये 1/2% नहीं है, 1/2 मार्क्स. दैट मीन्स अगेन इफ यू नोटिस 25% नेगेटिव मार्किंग, विच इज वेरी गुड. I give you the strategy, then you will discuss about it. So कैटेगरी 2 में भी वही रहेगा. और अगर मैं बात करता हूं सर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे. फिजिक्स केमिस्ट्री में टोटल मिला के देयर विल बी 10 क्वेश्चन विच विल फॉल अंडर दिस, राइट. और मैथ्स में यू विल हैव 15 क्वेश्चन विच विल फॉल अंडर दिस कैटेगरी. इनका ऑब्वियस ही बात है, टेंडेंसी क्या होगी कि क्वेश्चंस का थोड़ा सा जो डिफिकल्टी है एज कंपेयर टू. ओके, अब नाउ अगर हम बात करते हैं डिफिकल्टी वाइज इन दी कैटेगरी, ऑब्वियसली इट मेक सेंस कैटेगरी 2 will be a tad difficult than category 1. Obvious ही बात है. But the important point, the tip here is to highlight that the category 2 is of 2 marks. So अगर आप देखो, हमने बात करी थी initially कि category 1 was total of 110 marks with a lot of questions, right? For how many total questions were there for this? Notice 110 questions will fetch you 110 marks. Here what is happening? They are 10 into 2 which is 20. And this is into 2, if I do, is 30. This is 50 marks. 50 marks. And how many questions are there? Obviously, 2 is there. 25 questions can give you, now you have started to think. 25 questions can give you 50 marks. Why I'm highlighting this is because obviously for 110 questions, time required will be higher. So here the important thing is time, which we do not consider. So time becomes crucial. Time चाहिए हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. Whereas to solve, obviously 25 questions, time will be. So T2 अगर मैं डिफाइन करता हूं, T1 पैरामीटर ले लेते हैं. T1 is category 1, T2 is category 2. Obviously T1 will be much greater than T2. Does it make sense to all of you? अगर मैं सेक्शन वाइज भी बात करता हूं, मैथ्स में इसको ले लेते हैं कैटेगरी 1, ये हुआ कैटेगरी 2. कैटेगरी 1 में कितने क्वेश्चन आ रहे थे यहां पर? नोटिस करो 50. सॉल्विंग 50 मैथ्स प्रॉब्लम्स एज कंपेयर टू 15 मैथ्स प्रॉब्लम, चाहे डिफिकल्ट भी क्यों ना हो, पर 50 को पढ़ने में तो टाइम लगेगा ना, उतना डिफिकल्टी तो होगा ना. दैट्स द इशू. ठीक है, तो अभी इसके ऊपर पूरी स्ट्रैटेजी डिजाइन करेंगे बात, पर पहले एक बार कैटेगरी 3 और देखते हैं. सो नाउ कैटेगरी 3, कमिंग टू कैटेगरी 3, दिस इज वेयर WB, आई लव WBJEE फॉर दिस, ऑनेस्टली स्पीकिंग. सो WGB is, I would say, is a paper which is better designed by as compared to JEE Mains. I am in love with this paper because of the categories they have given. Why? Because this brings you more towards JEE Advanced style, right? JEE Advanced आधे से ज्यादा आपको कंफ्यूज कहां करता है? बच्चों को पता ही नहीं होता कितने नंबर का क्वेश्चन कहां है, कहां मैक्सिमाइज करना है. सो जो ये कैटेगरीज हैं, दिस एक्चुअली ऑल्सो हेल्प द एग्जामिनर चेक द क्रिटिकल थिंकिंग एस्पेक्ट, राइट? अपार्ट फ्रॉम नॉलेज, ये क्रिटिकल थिंकिंग यहीं पर चेक कर लेता है कि यार किसी को यहां पर भी शॉर्टकट बनाना आता है या नहीं आता है. एंड ऑल्सो इट विल चेक यू ऑन मल्टीपल टारगेट. ठीक है, वो देखते हैं. सो इफ यू सी कैटेगरी 3, इट इज more than one correct, right? जैसा JEE Advanced में पूछा जाता है, more than one option could be correct. Now, important thing is, again, it will gonna fetch you 2 marks only, but there is no negative marking. So important point is there is no negative marking here. That's the important stuff. There is no negative marking, right? Very very important. मैं इसको highlight कर देता हूं. There is no negative marking. और मतलब क्या है कि इसमें partial marking. So what do you mean by partial marking here? Partial marking का क्या मतलब है? I'll explain. So for the partial marking part, if you notice, if let's say there are options which has A, B and C as answer, and you mark A for example, तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 2 into 1/3, because 3 options were correct and you marked only one of them. Let's suppose if you marked A and C, so how many marks you will obtain? 2/3 into 2, right? But if you mark A and D, then don't expect you will get 2 into 1/3. You will not get 2 into 1/3 because of one of option correct. Rather, you will get a 0 here. You will not get any marks here. No marks at all, right? So answer is, oops, no marks here, right? Please remember this. But important thing again that we should
कंसिडर हियर कि जो ज्यादा बड़ी बात नहीं है यहां पर। अब फिर से देखते हैं पीसीएम, हाउ मेनी क्वेश्चंस आर एक्चुअली आर गोइंग टू बी ऑफ कैटेगरी 3, 5, 5 and 10. Not much questions, 10 in total here into 2 comprises of 20 marks, and this is 10 into 2 again comprises of again 20 marks. So this section comprises of 40 marks. Okay. And if we talk about the time factor, so we are considering the another factor is the time. So हमने T1 बात करा था category 1, T2 बात करा and category 3 time 3. Obviously T3 इंडिविजुअल क्वेश्चन पे टाइम ज्यादा लगेगा, बट इफ यू नोटिस इन एवरी सेक्शन दे आर नॉट टू मच ऑफ अ क्वेश्चन. तो मैथ्स में अगर 10 क्वेश्चन दें तो कितना टाइम लगेगा वो हमें सोचना है. सो फॉर एग्जांपल इन टोटलिटी मैथ हैज 75 क्वेश्चंस, राइट. 75 क्वेश्चंस आर देयर इन मैथ्स. उसके लिए हमें कितना समय मिल रहा है? वी आर गेटिंग ऑलमोस्ट 2 hours, दैट इज 120 minutes. दैट इज व्हाट यू नाउ हैव टू थिंक, दैट वेयर आई हैव टू स्प्रेड माय 120 minutes in T1, T2 and T3. So it's all a game of time, not your categories. Understand this way. Obviously selecting one or more is going to take almost, so for example जहां आप सिर्फ एक ऑप्शन को पकड़ के पहले सॉल्व करते थे, अब आपको उसी के लिए बी भी चूज करना पड़ सकता है, सी भी और डी भी. सो ऑलमोस्ट इट इज गोइंग टू टेक यू 2.5 times the time which you actually required for T1. ठीक है, T1 से 2.5 गुना टाइम ज्यादा लग सकता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में. लेट्स सी नाउ ऑल थ्री इनटू अ सिंगल पिक्चर. सो नाउ कम बैक टू द initial exam pattern. Now we have a lot of things to discuss here and the major strategy of attempting this. So T1, T2, T3 denotes the time. So if you notice for the maths part, if we talk about, let's say math, we are given 2 hours, right? We are given 2 hours to solve. There are 50 questions in the time 1 category, 15 here and 10 here. This fetches you how many marks? Let's write the marks also. Since it's 2, it's 30. It fetches you 2 and it fetches you 50. So now if I have to ask you a strategy, obviously you will say, sir, what makes sense here? Out of this, here, spending time on T2 first makes sense, because for single correct, and you are going, if you attempt all those 15 correct, you make 30 marks here. Very, very important strategy to understand. 30 marks here. Whereas if you notice the next big thing, again for 10 questions you make here 20 marks, but there is no negative here. Remember, there is no negative here. So according to me, the ideal time for T2, that is 15 questions, should be that you should actually try full on for this. So even if it takes 3 minutes to solve a particular question, you should be able to devote it. So I would say T2 should be between 40 minutes, 30 to 40 minutes you devote. Now let's start calculating backwards. So in maths, you are given how much time? You are given 120 minutes, right? Superb. So let's say even if we go with the max of saying 40 to 45 minutes. So here, if you notice, we are still left with 80 minutes, right? Let's say this we'll stick to 40 minutes target. Now 80 minutes have to be spread between two particular sections. That is this 50 and this 10, right? All of you agree with me on this? 50 here and 10 here. Now the next target should be, this is where your major role will come in, and I would also advise to reduce this time. So make sure that this is always less than or equal to 40, not beyond the the limit of the 40. So if you do that, now let us suppose 80 minutes. 80 minutes में out of those 50 questions, obviously आपको सारे नहीं आते होंगे. So don't focus on those questions which you do not know. So target should be, then give your time to T1. T1, and my target is just figure out 30 questions which you can think you can solve. 30 questions. Now these 30 questions should not take you more than 60 minutes to solve. Think like this. 60 minutes, right? 60 minutes also gone. Now 60 minutes gone. Now how many minutes left? You still have left 20 minutes with you. Out of those 20 minutes, now your target should be to give those 20 minutes to this T3 component, and make sure mark every question. Mark every question. Whatever way, right? इसमें कुछ भी, किसी के पास कोई क्लियर आंसर नहीं है, जो लगता है तुम्हें मार्क कर देना, पर सारे ABCD मार्क मत कर देना, बिकॉज वो तो प्रोबेबिलिटी हमें पता ही है कि ABCD मार्क करके आगे तो गलत ही गलत होगा, है ना. सुपर ट्रिक. अब ये पढ़ोगे कहीं और कोई बच्चा इसको वीडियो बना के डाल देगा और तुम बहुत खुश हो जाओगे, बट दिस कॉमन सेंस, राइट? प्लीज डू नॉट मार्क. अगर तुक्का मारना है कि सर हम ABCD सारे मार्क करके आ जाएंगे, नंबर तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि इनमें से एक भी गलत हुआ तो कुछ नहीं मिलेगा. वेयर इट इज स्टिल आई वुड से बेटर टू मार्क इफ यू डू नॉट नो एनीथिंग. मेरे से अगर पूछा जाए, बेटर है आप जाओ और सिर्फ ओनली वन ऑप्शन मार्क करके आओ. ओनली वन ऑप्शन विच हैज अ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्चुअली गेटिंग सिलेक्टेड. ठीक है, उसमें अगर एक भी नंबर बनता है तो 2 into 1/4 या 1/3 के रेशियो से नंबर मिल जाएंगे. सो द आइडियल टाइम आई हैव ऑलरेडी गिवन यू. I have already given you the strategy. Spend time on T1, then move to T2.
and then move to T3. Again, if you notice, everything is time. Time is the killer thing which you have to worry about the exam. Okay, so this is how you have to attempt the paper, how you have to prepare. Now I'll talk about that. Okay, so talking about the syllabus. सिलेबस कोई ज्यादा नया नहीं है, सिलेबस वही है जो आप सब लोगों ने जेईई मेंस के लिए पढ़ा है, सो नथिंग न्यू टू एंड नथिंग टू वरी अबाउट. एंड इफ यू टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंस अगेन आप उनको दो जो क्लास 11th के नहीं, जो आपके क्लास 12th के टॉपिक्स है, जो भी इनफैक्ट आई वुड रिकमेंड जो आपका इस समय बेटर प्रिपेयर्ड है टॉपिक, ठीक है, उसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें. डू नॉट वरी टू मच अबाउट things which you are not able to prepare. Any given day we will talk about the cutoffs also here, and you will be able to see that cutoff यार इतनी हाई जाती ही नहीं है. Nobody is asking you to solve the entire paper. So even if let's say we talk about the physics and the chemistry aspect, so physics और chemistry में भी आप देखो तो कितने क्वेश्चन बन रहे थे. There were around 80 questions in total, right? 80 questions in total, for which you are given 2 marks, 2 hours actually, to be honest, 2 hours for 80 questions. Very good in fact, right? 120 minutes for, एंड आई वुड रादर नाउ स्प्रेड 40 फिजिक्स 40 केमिस्ट्री. तो यार ये तो और आसान चैलेंज हो गया. क्यों? क्योंकि ये 40 वाले जो क्वेश्चन हैं ये तो 30 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे. केमिस्ट्री है क्योंकि ये, ठीक है ना. सो ये 40 के क्या होगा, ये तो 30 मिनट्स में खत्म होगा. तो आपके पास एक्चुअल में देखा जाए फिजिक्स के लिए 90 मिनट्स बच जाते हैं स्ट्रेट अवे. सो फिजिक्स 90 एंड दिस 30, या फिर 80:40 रेशो में चलेगा. तो यार कोई ज्यादा बड़ा डील नहीं है. और उसमें देखा जाए फिजिक्स में आपको क्वेश्चन कितने सॉल्व करने हैं, 40 क्वेश्चन. So there are 40 questions in total which you have to solve, for which you are getting almost like more than 2 minutes per question. Nothing to worry. So just prepare what you have prepared. Do not worry about weightage. So इसमें important tip क्या है? A lot of you will think about, sir, what is the weightage of the chapters? Videos जाके देखोगे, आज लोग videos ढूंढोगे. Forget about weightage. That's the biggest tip. Forget about weightage. Just concentrate on what you have prepared. Solve past year questions. See to it that are you able to solve questions from that particular chapter which you feel you are good at. If good, that's it. That's the job, right? Even if you are going to score even 50% of this, you are going to get a very high chance and very high score. Believe me on this. So just concentrate, and again we'll focus the same strategy of T2. Then we'll go what T1, and then we'll go for T3 in all the 3, right? Okay. सेम स्ट्रैटेजी. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, दो द पीडीएफ विल ऑल्सो बी अवेलेबल हियर. पीडीएफ अवेलेबल करेंगे हम लोग इसका भी, ठीक है. तो उसमें जाके देख सकते हो, वेटेज भी देख सकते हो. इसमें अगर बात करूं, जैसे मैं पहले वीडियोस में भी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो अगेन 12th के टॉपिक्स है ना, दे आर मच मोर रेलिवेंट, राइट. बट केमिस्ट्री यार वैसे ही आसान होता है, हम सब लोगों ने प्रिपेयर करा है. सो आई विल नॉट लाइक टू हाईलाइट एनीथिंग, बट अगेन डू व्हाट यू आर गुड एट. गुड और लेट्स से योर स्ट्रेंथ, जो आपका स्ट्रेंथ है उसको जरूर कर लें. और अगर मान लो बहुत सारे टॉपिक्स सर गुड्स नहीं है या स्ट्रेंथ वाले टॉपिक रीजन में नहीं आते हैं, मेक श्योर यू रिवाइज बेसिक्स. You revise basics. Okay, and how do you have to revise basics? The best part of doing is doing past years. A lot of past years are there for which you can practice, and in the end of the video you are also going to get a link from where you can download the past years. Coming out, talking about the maths, which is the major section. आधे से ज्यादा वेटेज अगर तुम नोटिस करो तो यहाँ पर मैथ्स को दी गई है. तो मैथ्स में फिर से यार कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हम बात करेंगे कि वेटेज है, पर हाँ अगर वेटेज मुझे मैथ्स में जितना भी मैं बात कर सकता हूँ तो यार वेक्टर्स कर लेना, ठीक है. वेक्टर को हाईलाइट कर देता हूँ चलो तुम लोगों के लिए. वेक्टर है, प्रोबेबिलिटी है, जो 12th के टॉपिक्स हैं वो ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं आप नोटिस करोगे, वो हाईलाइट कर देता हूँ, वो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे. 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, राइट, वेक्टर 3D जिसे आप कहते हैं. तो ये टॉपिक्स हमेशा से ही इंपॉर्टेंट हैं जो आपको करने हैं. बट अगेन इफ यू आर स्ट्रगलिंग टू फिगर आउट कि बेसिक्स कैसे करना है, बेसिक चाहिए तुम लोगों को, तो बेसिक के लिए एक गाइडेंस दे देता हूं. MOG MathonGo ऐप डाउनलोड कर लो. इससे फायदा क्या होगा, यू विल बी एबल टू स्टडी डिस्ट्रैक्शन फ्री. ऑल दी टॉपिक्स आर देयर. जो यूट्यूब पे जितने भी वीडियोस पढ़े हैं वो आप पढ़ पाओगे, डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, कोई ऐड नहीं आएगा, कोई प्रमोशन नहीं होगा, आराम से पढ़ पाओगे, डिस्ट्रैक्शन फ्री पढ़ाई, और टॉपिक लेवल पे पढ़ पाओगे. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. टॉपिक लेवल वीडियोस विल बी देयर. तो आपको जैसे यूट्यूब पे पूरा 1.5 घंटे का लेक्चर है, उसमें कोई एक सिंगल टॉपिक पढ़ना है, फॉर एग्जांपल वेक्टर्स में आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ना है, एसटीपी पढ़ना है, तो यार वो ढूंढना पड़ेगा वीडियो में कहां है. वेयर एज इन दी ऐप यू विल एक्चुअली गो ऑन टू द टॉपिक, उसके अंदर आप जाके आराम से एसटीपी का वीडियो ही देख सकते हो. Got it? So this is all about the syllabus. Don't fret over the syllabus. घबराने की जरूरत नहीं है, जितना आता है उतना करो. Most important tip that I would say I have given for preparation. Okay, so now talking quickly about the target marks और ranks. तो हमें पता है कितने मार्क्स का पेपर है, 200 मार्क्स, ठीक है. और सरप्राइजिंगली आई शुड नॉट से, बट आई एम अशेम्ड टू से दैट अ लॉट ऑफ वेबसाइट, इवन
जिन लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, बड़े बड़ी ऑनलाइन कंपनीज हैं, टेस्टिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, उनका अगर आप जाके ब्लॉग्स पे देखोगे तो उन्होंने यहां पर लिखा हुआ है 213 मार्क्स गए हैं WG में हाईएस्ट। यार 200 मार्क्स के पेपर में 213 नंबर कैसे आ सकते हैं, ये वही जानते हैं। बिग बिग कंपनीज, आई डोंट वांट टू ने, दे स्टार्ट विद ई, दे स्टार्ट विद वी, दे स्टार्ट विद बी, बट कॉपी कर रहे हैं, हल्का सा भी रिसर्च नहीं कर रहे हैं कि भैया पेपर में 200 मार्क्स टोटल हैं, 213 नंबर कैसे बन सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स द प्रॉब्लम। इफ यू नोटिस हियर, this is 145. If you get out of those 200, you're getting under 50, for which I would definitely know a lot of people would target Jadavpur University Computer Science Division, which starts at even 5th rank. People do leave their prestigious back ranks at IIT and go to Jadavpur University. So AIR, I should not use AIR, but state rank 5, right? Rank 5 पिछले साल ओपन करा था और कुछ 80 के अराउंड ये बंद भी हो गया था। किसका? कंप्यूटर साइंस डिवीजन की बात कर रहा हूं। सो यू कैन गो, इसमें मैं ज्यादा भी नहीं घुसूंगा क्योंकि अभी हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं, बट आई हैव गिवन यू अ टारगेट दैट व्हाट टारगेट यू शुड सेट टू स्कोर अ रैंक एंड कॉरस्पॉन्डिंग हाउ मच मार्क्स यू शुड एक्सपेक्ट। ठीक है, सो बहुत सारे लोग इसमें, अभी भी मेरा टारगेट होगा तुम लोगों को समझाने का, दिस इज अ इजी रेंज 95 to 125, all of you can score, and you know that if you score less than 1500 rank, your future is secure there, right? There are really good colleges in Jadavpur, University of Kolkata, very good colleges which will give you good placements. So your target should be, अच्छा इसमें एक ट्रिप और दे रहा हूं यार। अब बच्चे ना ब्रांच चलाना शुरू कर देंगे, सर मुझे इस ब्रांच में जाना है, मुझे इस कॉलेज में जाना है। यार अभी पहले ना प्रिपेयर कर लो, अभी पहला टाइम किसका है? प्रेपरेशन का। अभी रैंक तुम्हारे पास कुछ है नहीं, ब्रांच और कॉलेज जान के क्या करोगे? तुम्हें पता है अगर कि तुम्हें कंप्यूटर साइंस में जाना है, कौन से कॉलेज में जाना है, वो रैंक मैंने तुम्हें दिखा दी है, पहले पढ़ लो। टारगेट रखो कि यार इससे ऊपर की ही रेंज में आना है, उसके बाद हम ये सारे कॉलेज और इन सब के ड्रामे शुरू करेंगे। इससे ऊपर इस तरीके से सोचना शुरू करो। ठीक है, सो एंड टू एंड टू कंप्लीट दिस स्टफ, इट्स ऑल अ स्पीड गेम। वी हैव टॉक्ड अबाउट द स्पीड गेम, एंड स्पीड गेम को अगर मैं यूटिलाइज करूं तो बेसिकली इट्स अ टाइम गेम। टाइम गेम में वी जस्ट, अब नाउ आई एम समराइजिंग, T2 सबसे पहले करेंगे, देन वी विल मूव टू T1 एंड देन वी विल मूव टू T3, राइट? वन शुड नो द आर्ट ऑफ क्वेश्चन सिलेक्शन, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किस फैक्टर में आएगी? टाइम 1, दैट इज योर कैटेगरी 1। सो कैटेगरी 1 में अगर आप सारे 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो मैथ्स में, यार तो फंस जाओगे, वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल टू डू दैट स्टफ, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग डोंट फ्रेट अबाउट इट। तो सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट क्या है? क्वेश्चन सिलेक्शन करो, आगे भागो और भाग जाओ। तो जैसे T1 में 60 क्वेश्चंस आर देयर इन PC and 50 questions are there in maths, your target should be to find out which ones you will be able to solve. Okay? Next thing, be prepared for tough questions in between. So यहां पर एक demotivation होती है हमें कि सर tough question आ गया। There might be possible that there will be 2, 3 or let's say even max, इससे ज्यादा नहीं होंगे, 5 tough questions in a line. राइट? और जो टफ क्वेश्चन है, टफ की भी देखा जाए, टफ की कोई डेफिनेशन नहीं होती है, जो तुम्हारे लिए टफ है वो दूसरे के लिए शायद ना हो, बट अकॉर्डिंग टू यू एज वेल आई वुड से देयर विल नॉट बी मोर देन 5 क्वेश्चंस टफ इन अ सिंगल लाइन। सो डोंट वरी अबाउट इट। इसमें बोलते हैं ना इंपॉर्टेंट डायलॉग, अपना टाइम आएगा, वो पेपर में होता है, हम अपना टाइम आने ही नहीं देते हैं, राइट? सो अपना टाइम आएगा, ये याद रखना है, उससे पहले पेपर में भागना नहीं है। एंड यूटिलाइज द ब्रेक प्रॉपर्ली, यू आर गिवन अ 1 hour ब्रेक इन बिटवीन। Believe me, if you do not relax here, आप already physics chemistry बिगाड़ के आ जाओगे। So relax, take it easy, paper is still 1 month ahead, don't worry and fret about it. Okay guys, so this is how you should study. If you want the previous year papers, go to this particular link and you will be able to find the WBJEE papers from 2017, 2014 to 2017. That's how you can attain those previous years. Plus we'll try, all right, 2018 as well, right? So 2014 to 2018, we'll try to put all the papers here on the link that is there. Please go and do them. So if I have to talk about the strategy for 30 days, quickly saying, I've given all the answers. Just do what you are good at. Don't fret about things which you don't want to do. Just do what you have already prepared, right? You have already prepared. And the important strategy that I can then also tell is take mock test, right? Do take mock test. You should at least take 3 to 5 mock tests so that you are better prepared and you can try that thing out कि मैं सबसे पहले करूंगा सर T2, फिर T1 and then I'll go with
53। सो ये जब ही अप्लाई कर पाओगे जब आपने ये मॉक टेस्ट दे रखा हो। 3 से 5 मॉक टेस्ट दो, और मॉक टेस्ट के लिए डू नॉट वरी सर आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, ये होता है ना एक, इसके आगे नॉट लग जाता है जब, तो आपका मॉक टेस्ट देने का मन नहीं करता है। Believe me, you will never be prepared. So please go forward and take the mock test. Because of JEE Mains, you have already prepared a bit. So do not worry too much about whether you have prepared or not. You can take test anytime. Start taking tests. So for example, if let's say I count 1 May, you can take on 1st, then you can take on 5th, 10th, 15th, and then 17th, then again on let's say 20th. So last exam that you can take for practice should be on 20th. That's how you can improve, and that's how you will work on. ठीक है जी. In the end, MathonGo wishes all the very best to all the students who are preparing for WBJEE. All the best wishes, lots of love from our side. Keep working hard, and we all, as we say, you might get your deserved rank. If you are really deserving, if you have really worked hard for it, you should get what you deserve. And remember, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है for all those kind of details. Plus, what you guys have to do, tell me guys, you know the answer. So you have to comment in the section paper फोड़ना है. Please do not forget about this. This is the MathonGo slogan. Please go and give me a loud shout of paper फोड़ना है in the comment section. God bless you all. Keep working hard.